Hey guys, hello. Welcome everyone. Okay, let me start with the basic one. Okay, guys. Cool. So all set and good to go now, right? So let's start today. So in this SQL session, we will not be using the MySQL workbench over here. Instead, we'll be using another tool over here. I thought it'll be great over here to explore the other tools as well. So I think I'm about to use one tool called as dbeaver, where we will be using the codes will run will be absolutely same. Everything is same. It's just that I think will be just now. Let me present the screen first. Right. So I think here what I've done is I've used something called as dbeaver, right, where we can use we can form connection and use SQL over here. We can start we can run our SQL in a local environment. Okay. Obviously, I think we have already seen that there are a lot of online compilers over here, but I thought that I think we should choose something which is more towards an online compiler kind of stuff, right? So I think I'll just do it over here. Let me try and yeah, I will just do it over here, right? So it looks something like this. Right now, I haven't imported any database over here, but I'll do that as well. Right now, I'm just going for a simple database over here, and this solves my problem of because SQL Workbench. I've been hearing that a lot of people have a lot of problems, when it comes to SQL Workbench download. So I think we probably can go for slightly better things over here, and I think that's why I've gone for uh, this dbeaver tool over here. There are certain advantages, although I haven't really gone for, if you look at it, you can see that the interface is almost the same thing, right? We can easily see that we can, towards the left hand side, we are able to see the database. We can see there's a sample database over here, and we are using SQLite over here, right? So these are all the tables in it. We'll see that these are all big, there are many tables over here. We can see that 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tables are here over here, right? And we can select any one of the tables. Okay, now let me do one thing. What we can do now is we can just have a look at each and every table. Let's see how the table looks like, right? I'll go for, and meanwhile I'll keep on getting the example of, or gist of how it spans up over here. So if I just look at album, right? So a select star from album is going to give me the album table over here. I found some advantages for this particular tool over here. Now I can actually click on a cell and see its value as well. Okay. And probably I can enter over here and change the values over here, just like in case of Excel. That is something just that is pretty much applicable here. That, is the advantage which is definitely carried forward over here. Right. Now, if I take it forward, album, it appears to be album ID, and this is the title of an album. The album might be probably, you know, uh, it might just be related to the, it might be audio album, it might be video, it can be any kind of album, it can be any artistic form over here. Okay. Now, every album ID has an artist, hence there's an artist ID. There's a column one over here, which I don't think is required. We can right click over here and probably we can uh, probably think about reconsider, dropping the column over here. And probably we can do that. I think right click is not allowing us to do it over here, but it's okay. Later on, once we require it, we can easily drop the column over here. Okay, right. So I'll just go for this alter. Oops.
As we can see, I'm running the same code. Alter table, right? Alter table. Which table I'm talking about? Album. Okay. And what kind of alteration do you want? I'll say drop column 1, right? Drop column 1. This is one query I want to execute over here, and say that let's drop the entire column. Once I do that, right, we can see that this is the status of the query that we can see over here. And as you can see, the query comes out to be absolutely fine. Now if I look at this thing, now we can see there is no column ID over here, right? So we can use that, right? So we can select start from album, and we can easily drop it up over here. Okay, so ये काम हो गया भाई हमारा, हमने ये काम कर दिया. हमने इंग्लिश पे आ जाते हैं, राइट? वी हैव सीन दिस एंड ऑल्टर टेबल करके हमने इसको ड्रॉप कर दिया यहाँ पर. ठीक है, एक क्विक ग्लिम्स ले लेते हैं हर पर्टिकुलर टेबल के ऊपर. ओके, सेलेक्ट star from artist. This is a demo data which is given to me by this particular app called as dbeaver, and I'll be using it. So एक बार देख लेते हैं क्या है. जैसे इसमें आर्टिस्ट आईडी दिख रहा है मुझे, है ना? एंड मुझे इसके कुछ एडवांटेजेस दिखे, सो आई थिंक I'll go for that as well. So I'll go for this one, right? There are certain Excel like functions which I really like, and you know we can easily see some of the clues being working very I mean, we can expand this, we can collapse this. A lot of things can be done from here. Okay, so यहाँ तो ये आर्टिस्ट आईडी और नेम बता रहा है भाई, आर्टिस्ट आईडी और आर्टिस्ट का नाम बता रहा है यहाँ पर. ओके, देन आर्टिस्ट के बाद आता है कस्टमर. वेरी इंटरेस्टिंग. सो अब ये एल्बम और कस्टमर, सो अब यहाँ ऑटोमेटिकली एलियस दे रहा है. हर पर्टिकुलर टेबल का अपना, जैसे आप टेबल कॉल कर रहे हो अपने आप एलियस दे रहा है टेबल को. आप चाहो तो हटा सकते हो उसको, राइट? सो दिस इज माय कस्टमर आईडी. वी कैन सी दैट देयर इज अ कस्टमर आईडी, नेम, लास्ट नेम, कंपनी, कौन सी कंपनी में है वो, द एड्रेस, द सिटी, द स्टेट इन विच द कस्टमर बिलोंग्स टू, right? The country the customer belongs to, the postal code, the phone, the fax, and the email over here, and the support rep id. Who is the support representative over here, uska id yahan par diya hua. Okay, this is customer. So it appears to be of a entertainment company's data as of now, or probably a data of something which is related to entertainment over here. Let me go for employee. Okay, if I go for employee, and if I go for it, right, this is how I look like. Employee ID, last name, first name, title, reports to. Okay, birth date, hire date, address, city, state, country, postal code, phone, fax, and email. These are all nothing but, right? So this is where we can see all the employees have the same email ID, right? So you can see that Chinook Corporation. Okay, so this is something related to something called as Chinook Corporation over here. राइट, वी कैन गो फॉर FO, देन वी कैन स्टार्ट अंडरस्टैंड. ओके, कस्टमर का डिटेल है, एम्प्लॉय का डिटेल है. कस्टमर के डिटेल में वही बेसिक सारी चीजें है. डेमोग्राफिक डिटेल होगा, आपका नाम, नंबर, या किसको रिपोर्ट कर रहा है ये, राइट? एंड बर्थ डेट हो गया, हायर डेट, एड्रेस, सिटी, ये सब इसका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ही है. कौन से स्टेट में वो दिख जा रहा है मुझे, कौन से कंट्री का है एम्प्लॉय, ये भी दिख जा रहा है. एंड आई कैन सी दैट हाउ मेनी outputs are there. We can see there's 8 over here, and we can easily see that the 8 rows are fetched over here, right? So I'll go for FOO. And in this particular one, there's hardly any data over here, and we can see there's nothing. We can just, then in that case, drop the table. Okay, I'll go for drop table FOO. Right, what I'll do is I'll execute this. I said okay, right? Drop it, because I don't think any resemblance of this. Do I need to refresh this? I don't think so. If I just look at it, FO is still there. Very interesting. ठीक है भाई, कोई बात नहीं. चलिए, कोई बात नहीं. It's okay. Let it be. Now, if I go to genre, let me start with this. I think I'll just try right clicking over here, and okay, and I'll delete this, right?
and delete table FOO. I said yes because I didn't find anything in this table. Okay, so ये बस दिखा रहा है, represent कर रहा है, but table में there is hardly anything over here. But the point is the table is still being represented in the list. That is okay, right? I think the table is not there, and as of now it's not causing me any trouble. So let me do one thing. So let's start from FO and I'll move on to the next table over here, right? And let me copy this and put it up over here. यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसको. So let's start from genre. Let me see genre. Now if I go for genre and run this, right, and genre ID and name, right, so we can see which genre ID does a particular application, does a particular track, or does a particular album belongs to. कोई ना कोई genre तो होगा ना. We can see that 25 different kind of genres, और हर genre का एक नाम है. First genre is rock, second genre is jazz, third one is metal, fourth one is alternative and punk. Okay, then we have rock and roll, then we have blues, Latin. These are all nothing but the names of the genre over here. Okay, then we can see invoice. That is interesting. Let me see what is given in the invoice over here. Okay, I'm just going through, taking you guys through that data. राइट, सो इनवॉइस में इनवॉइस आईडी है, किस कस्टमर आईडी के अगेंस्ट मैंने रेज करा था, इनवॉइस डेट है मेरे पास बिलिंग एड्रेस है, बिलिंग सिटी है, कौन से सिटी में कस्टमर रहता है, बिलिंग स्टेट कौन से सिटी में कस्टमर, then billing country, billing postal code, and total amount. This is my total amount over here. Okay, guys, those who have joined us recently, please make a note that what we are doing today is I'm using a different tool, right, called as a Debeaver. Using this, I'll be able, this is basically SQL Lite I'm running over here, and I found certain advantages of this tool: easier to download, easier to use, and there are certain other advantages which I found. So I thought probably you should try this particular tool for other people as well. So we have been using MySQL Workbench, so I think we'll be using this tool onwards in case we do not face any kind of problems which will take us back. Okay, let me go for invoice line. The invoice detail, right? I'll go for invoice line and I'll run this. Right, we can see invoice ID. Invoice line means what is the invoice ID, what is the track ID, what is the unit price over here, what is the quantity, right? So for every invoice line, we can see that there are multiple invoice IDs over here. And there's a track ID, there's a unit price related to it, and there's a quantity. And that around many rows over here, in fact 600 rows, and it keeps on going. It keeps on going, and probably I can just see that I think here it is, we can see how many data to refresh over here. Let me go for 5,000 over here. Let me enter. That way we can totally see how many data do we have over here. So we had 2240 data, 2240 different level of invoice line. I think it still is very specific over here and probably will not require the totality over here, but let's see. And I think then we have select start from media type. एक go through कर लेते हैं, that's it, nothing else, media type. All right, and that's it. These are all media types. Then we have something called as playlist. So we'll say, media type. What is media type? Name of the media type. I don't think it basically again playlist is one, and name of the playlist over here. बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा. Now SQLite schema, I think it's a completely different thing, but still I'll try and run this. This is basically giving me table album. This is something we can probably ignore at this point of time. And finally, I'll go for track. So here I can see that there is a big, track ID, and track means obviously it's an audio track. Audio track का मतलब है उसका नाम दिया हुआ है, कौन से एल्बम को बिलोंग करता है ये दिया हुआ है, कौन से मीडिया टाइप आईडी को बिलोंग करता है वो दिया हुआ है, कौन से जॉनर को बिलोंग करता है वो दिया हुआ है, एंड कौन से उसके कंपोजर है, वो चीजें मुझे दी हुई है यहाँ पर. ओके, सो मेरे को दिख गया, मैन इट अपीयर्स टू बी एन एंटरटेनमेंट कंपनीज डेटा, एंड आई विल कम बैक स्ट्रेट अवे ओवर हियर. आई प्रॉब्ली एल्बम मेरा मेजर एक
टेबल होने वाला जो मैं यूज करूंगा. Then I probably might go for artist. Okay, this is one table I might use, right? And I might use customer and employee. Let me first run customer over here. Okay, and this is all my customer, है ना? Customer है यहाँ पर. And then we go for customer के बाद बारी आती किस चीज की? Employee की. So let me go for employee. Now we can see employee and various other things. The only thing that I cannot see is the salary over here. Okay, so the salary is not being mentioned very clearly. That is okay. And I think invoice एक बढ़िया जगह है. I'll just move on to that as well. Invoice. This particular part kept on attracting me. ये मेरे को कब से attract कर रहा है. So I'll go for invoice ID, and I think invoice amount is there. Okay, so I think this will help us to approximate few things over here. Anyways, so ये सारे tables हैं. Now let me move on to something that I wanted to move on to today, and that is called as. Before that, I'll just increase the display size so that you guys can see the codes clearly. Although it's big enough, but I think I'll just extend it further so that we can easily see all the codes very properly. है ना? I think everything is very clear now. Now, if I just go for this, let me go for this one. Let me maximize this and check it out once. I think so. It's fine. Yeah, I think there is no problem whatsoever in reading the codes now. Oops, I am really sorry. I guess I forgot to. There's a reason. This for some reason I'm not able to share my screen. I'm so sorry for that. I guess that is the problem. Adjustment. I think it's fine now. Cool. Yeah, the screen is up. I'm so sorry. Yeah. So now let's move on to what we intended to do today, which is numeric function. Numeric functions are the built-in functions, which are basically these are all built-in functions, which are built-in functions, है ना? ये वो built-in functions हैं जो specifically numbers के लिए बने हुए. That is, these are all specific numeric values over here. Okay, specific numeric values. तो कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस हैं. कभी कभी मुझे न्यूमेरिक डेटा को मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़ती है. तो किस लेवल पर मैनिपुलेशन, क्या क्या मैनिपुलेशन होता है, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं. ओके, लेट मी हैव अ लुक ओवर हियर. नाउ इफ फॉर एग्जांपल लेट्स से आई वांट टू गो फॉर total invoice ID. Okay, now okay, here I probably will not be able to do it. I think the first one is abs. Abs is just going to give me ABS is just going to give me the absolute value of that particular number. Okay, it's just going to give me the absolute value of that particular number. So I can use something like this. आप ऐसे भी देख सकते हैं. देखिए, आप एप्स को अलग से रन करके भी देख सकते हैं. For example, if I go for select ABS, right, abs of any number over here. कोई भी नंबर ले लीजिए आप. जैसे 9, you'll go for 9.9. Okay, and now if you run it, the output will come out to be equal to 9.9. You can take absolute value of minus 9.9. It will come out to be the same, 9.9. And you can give an alias over here, right, as a value, let's say, right. Then in that case जो कॉलम आ रहा है आपका, कॉलम जो है -9.99 नहीं आएगा, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा. विल बी कॉल्ड एज वैल्यू. कैपिटल वी कर लेते हैं, चलो, है ना. So it comes out to be 9.9. So abs function जो एक न्यूमेरिक फंक्शन है, वो क्या फंक्शन है, ये किस टाइप का फंक्शन है? The function is giving me the absolute value of the number. उस नंबर का क्या कर रहा है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है. ओके, एंड उसको हम लोग एज वैल्यू कर रहे हैं. देखिए, कोड हमारे सारे माई सीक्वल जैसे ही होंगे. इट्स जस्ट दैट द इंटरफेस इज डिफरेंट. अलग, स्लाइटली थोड़ा सा अलग चीज दिख रही है, बट आई थिंक इट्स फाइन. वी कैन डेफिनेटली एडजस्ट आवरसेल्व्स ओवर हियर. ओके, नाउ दिस इज -9.9 एज वैल्यू. कोई इश्यू नहीं है भाई, ये हो गया आपका, है ना. नाउ ठीक है, दिस इज वन.
अब इसका यूज कहां करता हूं मैं एब्स का? I probably would like to use ads where I'm 100% sure that what I need to do is to select the value, and I it's basically the positive part of it. And अगर किसी ने गलती से नेगेटिव कहीं पर एंटर कर दिया है तो उसका पॉजिटिव आ जाए. For example, if I input a negative value somewhere by mistake, I should definitely get the positive value of it. For example, if I go for select, oops, 2e select, this is giving me the suggestions over here. Select, I'll go for, if I just look at invoice टेबल में अंदर एंटर करता हूं, कॉलम्स देखता हूं और यहां पर मैं टोटल देख रहा हूं. सेलेक्ट टोटल, oops, very interesting. Select total and abs, absolute value of total, right, from invoice line. Okay, from invoice, sorry. Now if I want to run this, select total and absolute value of total, I'm basically looking at total and abs total, right? We can give a name over here as well. बट आप देख रहे हैं टोटल में गलती से अगर किसी ने माइनस कोई नेगेटिव एंट्री कर दी है तो एब्स टोटल वाला जो कॉलम है उसको हटा देगा. विल बी एबल टू एटलीस्ट कम अप विथ समथिंग व्हिच इज अ पॉजिटिव नंबर ओवर हियर, क्योंकि इनवॉइस अमाउंट जाहिर से बात है नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? इनवॉइस अमाउंट नेगेटिव नहीं हो सकता. ओके, now if I enter and let's move to the next one. इसको मैं minimize करता हूँ. I like to see all the tables at once over here, so I think I'll just keep that going. Apps के बाद the next function that I like to understand or like you to go through is something called as seal function and floor function. Okay, seal and floor function. Let me go for select. टोटल ही लेते हैं मैं यहाँ पर. टोटल एक लेता हूं मैं. अभी रेड दिखा रहा है बिकॉज टोटल को रीड नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने टेबल नेम नहीं दिया हुआ. सेलेक्ट टोटल एंड आई गो फॉर सील ऑफ टोटल. ना यहां पर आप थोड़ा देखकर बताइएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एज as well, I'll call it seal only. Okay, let me give it seal only. As seal from, हमें टेबल बताना पड़ेगा, isn't it? We need to tell what is the table, right? Select ये वाला कॉलम, उसके बाद ये चीज मैंने कर दी है किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे. As seal from which particular टेबल, कौन से टेबल से जाना चाहते हैं आप? तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है I want to go for, और I mean invoice. Okay, invoice वाला टेबल मेरे को go through करना है. So I'll go through this and I can see that it's giving me total and seal करके एक और कॉलम आ जा रहा है यहाँ पर, which is 1.98, 3.96. And can you just see what is happening over here? मैं इसको थोड़ा सा expand करता हूँ so that आप ज़्यादा output देख पाए. Alright, let me give an expansion over here, right over here. So can you see total and seal? Can you just make a informed guess? You can pause the video right now. You can make an informed guess. What do you think is seal function doing? Have a look at it. What do you think is seal function doing over here? If you've guessed it correctly, that's great. Seal function is taking every number to its next integral value. That is, it's taking every number into its next integral value. That is 13.86 to next integral value क्या होगी उसकी? 14. 0.991, 1.982, 1.982, 3.962, and so on like this. So it's taking to its, say every decimal number lies between two integer. Every decimal number lies between two integer. दो integer के बीच में लाई करेगा. अगर अब वो इन लेट्स से ये पिछला वाला इंटीजर इसे 2.6 हो गया, सो ये 2 और 6 के बीच, सॉरी 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है. ओके, आई थिंक अब कैमरा थोड़ा उल्टा है, सो आई जस्ट गो फॉर समथिंग लाइक दिस. बट इफ आई गो फॉर नंबर लाइन, राइट, प्लीज टेक इट अप. आई थिंक यहाँ पर आपका मिररिंग हो जाएगी थोड़ी सी कैमरा की, बट यू अंडरस्टैंड, राइट? सो इफ आई गो फॉर आई मीन लेफ्ट टू राइट ओवर हियर 2 and 3, सो 2 और 3 के बीच में 2.6 कहीं लाई करेगा. Seal function will take 2.6 to the next integer, that is 3. वो क्या करेगा? 2.6 को कहां ले जाएगा? वो 3 पे ले जाएगा. Okay, now if I look into this,
Jasmine, please. Sorry for that. Cool. Right. That's what seal function is. Seal function किस लिए यूज होता है भाई? मेरे को इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इसकी अगली इंटीग्रल वैल्यू बता दो, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. टेक मी टू द नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू ओवर हियर. दैट्स व्हाट seal function says. इसी हिसाब से आई कैन गो फॉर, इसी फंक्शन में मैं एक और ऐड कर देता हूं, यहां पर इसी कोड में एक और चीज ऐड कर देता हूं. इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं. विल कम ओवर हियर, कॉमा डाला. मैं यहाँ क्या दे रहा हूं? कॉलम नेम दे रहा हूं. सेइंग सेलेक्ट ये वाला कॉलम नेम, देन दिस कॉलम नेम, then I'll go for another column name over here, and that column name is floor, right? A floor of total, floor of total, है ना? as floor ही बोल देता हूं इसको मैं, as floor. Now can you just see the logic over here? एक और अच्छी चीज मेरे को यहाँ पर इस टूल की दिख रही है कि कलर का यूज कर रहा है. total is the name of the column over here. Seal, if you look at seal over here, the brownish color thing is nothing but the built-in function that we are referring to. This I have no idea. I mean, slight bluish color over here is referring to the column name. Again, this is a function, float function, and I think its alias is written as over here. Okay. And जो भी table, I think it's going towards slightly a pinkish color over here. That is why I can easily identify which one of them is the column. इनमें कौन सा फंक्शन है और इनमें से कौन सा ये चीज है आपकी, क्या टेबल नेम है. नाउ इफ आई रन दिस, यहां पर कितने कॉलम आएंगे? टोटल आएगा. टोटल का सील फंक्शन मतलब अगली इंटीग्रल वैल्यू आएगी, और टोटल का फ्लोर फंक्शन आएगा मतलब पिछली वाली इंटीग्रल वैल्यू आएगी, एंड सो ऑन लाइक दिस. सो यू कैन सी, राइट. अभी जो डेटा हमने यहाँ पर सैंपल डेटा लिया हुआ है, थोड़ा सा आज मैं बाकी सारे डेटा को इसमें ले नहीं पाया, बट आई रेस्ट एश्योर्ड दैट आई विल डू इट वेरी सून. ओके. नाउ यू कैन सी दैट टोटल, सील एंड फ्लोर. टोटल सील मतलब नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू, फ्लोर मतलब प्रीवियस इंटीग्रल वैल्यू. जैसे 1.98 मेरा 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 1 comes out to be the next integral value and 2 comes out to be, sorry, 1 comes out to be the previous integral value and 1 comes out to be, I'm so sorry, 1 comes out to be the previous integral value and 2 comes out to be the next integral value, right? It happens at times. When too many classes, then this happens. Okay, so इसको मैं properly resize कर लेता हूँ, और I think ये चीजें हैं. अब ये न्यूमेरिक फंक्शंस हैं जो मतलब बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं, तो मैं फटाफट गो थ्रू करता हूँ इसकी. अभी फिलहाल ये बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन में काम आती हैं, बहुत जनरल फंक्शंस नहीं है. आई मस्ट से दिस, राइट? इट्स नॉट अ वेरी वेरी जनरल फंक्शन, सो यू विल बी रिक्वायरिंग दीस काइंड ऑफ फंक्शंस इन वेरी वेरी स्पेसिफिक सिचुएशंस, है ना? बहुत सारे स्पेसिफिक सिचुएशन में ही आपको इसका यूज करने की जरूरत पड़ेगी. ओके. हाँ, अगला फंक्शन जो हम देखने वाले हैं वो काफी यूज का काम, मतलब उसका बड़ा यूज है. फॉर एग्जांपल सेलेक्ट, आई विल गो फॉर सेलेक्ट, एंड आई थिंक हम लोगों ने ये पहले भी यूज कर लिया है. राउंड, आई एम कॉलिंग राउंड ओवर हियर. राउंड is basically it's going to round up or round down the value depending upon depending upon what is the requirement over here. For example, 2.9, not exactly what is the requirement, what is the number over here. 2.9 का round अगर मैं करता हूं as value, let me call it value. Okay, round 2.9. Now if I run this, it's going to take approximate 2.9 over here to 3, right? Now if I make it 2.3, what kind of value will represent? It'll represent 2. Why? Because ये ना फ्लोर या सील्स, फ्लोर या सील में से किसी एक को यूज करने वाला है, इंटीग्रल वैल्यू पे ले जाएगा. लेकिन किसको? सील फंक्शन जो है, अगर आप देखेंगे सील फंक्शन, मैं तीनों को यहां रन करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. 2 मिनट रन करता हूं. राउंड का मतलब है इस फंक्शन के अंदर आपने जो भी एंटाइटी दी है उसको मैंने क्या कर दिया है? राउंड कर दिया है. नाउ राउंड अप है या राउंड डाउन है, उसका कॉल मैं नंबर को देख कर लूंगा. इज व्हाट सीक्वल इज सेइंग. तो आपने सीक्वल को बोला सेलेक्ट राउंड 2.3 ओवर हियर. 2.3 का राउंड अप इज 2, बिकॉज 2.3 से पहले वाला इंटीजर क्या, अब हमें ये बताया गया कि 2.5 के ऊपर होगा अगर वैल्यू, तो राउंड कहां पर होगा? वो 3 पर होगा. और 2 इससे नीचे होगा तो विल कम आउट विद दैट ओनली. ओके. वैसे राउंड 2.3 एंड मैं कॉमा डाल के एक और वैल्यू यहां पर देख सकता हूं, right? That is 1. Let me go for this thing. 3, 4. Let me go for 3, 7. 1 over here is कितने decimal places तक round up करना है. For example, if I run this, you can see that 2.37. 1 मतलब कितने decimal places है.
अगर मैंने कोई डेसिमल प्लेस नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर देगा, बाय डिफॉल्ट ये कर देगा जीरो, जीरो डेसिमल प्लेसेस मतलब इंटीग्रल वैल्यू पे ले जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ वन रखा तो ये मुझे वन डेसिमल प्लेस पर इसको राउंड ऑफ कर देगा। जैसे 2.37, 2.37 2.35 से बड़ा है तो 2.35 से बड़ा होने की वजह से वो 2.4 पर अप्रोक्सीमेट होगा। लेकिन अगर मैं 32 कर दूंगा उसको तो 2.32 2.35 से छोटा होने की वजह से 2.3 पर अप्रोक्सीमेट होता है और आई शुड से राउंड होता है। दैट इज वाई इसकी वैल्यू ये आएगी। ये मेरे बड़े काम आता है, खासकर तब मैं जब मैं कुछ डिवीजन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी हैव अ लुक एट इट। अगर मैं यहां देखूं जैसे एम्प्लॉय हो गया आपका, इफ आई जस्ट हैव अ लुक एट द कॉलम्स, ज्यादा न्यूमेरिक कॉलम है नहीं मेरे पास, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट्स अ चैलेंज ओवर हियर। एंड न्यूमेरिक कॉलम मेरे को एम्प्लॉयज में तो नहीं मिलेंगे, होपफुली कस्टमर में मिले। लेट्स सी, क्योंकि सैलरी जैसा भी कुछ कस्टमर में दिया नहीं हुआ है। यहाँ पर पूरा का पूरा डेमोग्राफिक डिटेल्स है, तो मुझे थोड़ा सा मैं डेफिनेटली इस डेटा फ्रेम में न्यूमेरिक कॉलम को खोजने में स्ट्रगल कर रहा हूँ, which is okay with me. That is okay, right? Let's not worry about that. Now, if I go to invoice with the hope that I probably will get a lot of, invoice ID मिल रहा है मुझे, customer ID मिल रहा है, invoice date मिल रहा है, billing address दिख रहा है, billing city, state, and again मुझे यहाँ पर total एक ही numeric value मिला। Okay, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। I think invoice line में भी we can just have a look at it. एंड यूनिट प्राइस मेरे को एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल रहा है, बट आई थिंक मेरे को याद है कि ज्यादातर यूनिट प्राइस 0.99 ही दिख रहा था वहां पर। Okay, next time once I would have added all the data over here, I think this will not be the problem which will come up over here. Okay, these are all the tables. Hello, ट्रैक में कुछ है क्या? यहाँ पर यूनिट प्राइस है, मिली सेकेंड्स। दिस इज इंटरेस्टिंग। लेट मी सी व्हाट इज मिली सेकेंड्स ओवर हियर। मिली सेकेंड्स, ओके, चलिए देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ कुछ नई चीज मिल जाए, मुझे मिल जाए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रैक, ये जो ट्रैक है ना इसको मैं देख लेता हूँ कि भाई तुम्हारा बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से एलियस दे देता है, व्हिच इज माइट बी ओके, माइट नॉट बी ओके विद सम पीपल, सो आई जस्ट गो विद दिस, है ना? इसको मैं ऊपर करता हूँ और यहाँ देख रहा हूँ एल्बम आईडी, मीडिया टाइप दिख रहा है मुझे, जॉनर दिख रहा है, मिली सेकेंड्स मतलब ये शायद लेंथ दे रहा है। एंड ये पूछा मुझे दे रहा है उसका साइज क्या है, स्टोरेज साइज क्या है यहाँ पर। आई थिंक दिस इज व्हाट इज कमिंग ओवर हियर, राइट? नॉट बैड। फाइनली आई गॉट अ बिट ऑफ न्यूमेरिक डेटा टू प्ले अराउंड विद, बट राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट प्राइस में अगर आपने राउंड लगा दिया तो ये 0.99 को 0.9 या 1 पे लेकर चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या राउंड लगाया है यहाँ पर, है ना? अब जैसे मान लीजिए मैं ये देखना चाह रहा हूं दैट फॉर रीजन आई वांट पर मिली सेकेंड कितना स्पेस लगता है। द स्पेस इज इन बाइट्स एंड मिली सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। सो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं इसी कॉलम में एक नया कॉलम डालता हूं। जैसे अब यहाँ पर ये ट्रैक है ना, मैं एक काम करता हूं, मैं एक आई टेल टू SQL दैट सेलेक्ट आप मुझे एक काम करिए, सेलेक्ट करके आप मेरे को क्या क्या दे दो। पहले तो इसमें जो जो है ट्रैक आईडी दे दो, ट्रैक आईडी ले लेता हूं मैं यहाँ पर, राइट? ट्रैक आईडी, आई होप ट्रैक आईडी की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, चलेगा। आई से गिव मी ट्रैक आईडी, और उस ट्रैक आईडी का मुझे आप मिली सेकेंड्स दे दीजिए, राइट? मिली सेकेंड्स ये चीज दे दीजिए, एंड मुझे आप दे दीजिए बाइट्स, एंड फाइनली मैं अपना कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पर। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूं, सेलेक्ट ये सब लिखने के बाद मैं एक फ्रॉम फ्रॉम पहले लिख लेता हूं। कौन सा टेबल है भाई? मैं ट्रैक से ले रहा हूं ये। So, इससे क्या होता है, आई थिंक इस पर्टिकुलर टूल में ट्रैक के साथ साथ ये सीधे सीधे उसका एलियस भी दे दे रहा है, बना के दे रहा है आपको। मैंने कहा भाई इतनी जिद कर रहे हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द एलियस। अब ये 3 कॉलम मुझे चाहिए, और चौथा कॉलम मैं एक देख रहा हूं यहां पर, विच इज बाइट्स डिवाइडेड बाय मिली सेकेंड्स। मतलब अब मुझे बाइट्स डिवाइड बाय मिली सेकेंड्स, क्योंकि एक बार मैंने ट्रैक ले लिया तो वो मेरे कॉलम को भी रीड करेगा। ओके, बाइट्स डिवाइड बाय मिली सेकेंड्स क्या कर रहा हूं मैं, हर मिली सेकेंड को स्टोर करने के लिए कितना स्पेस चाहिए। तो इसको मैं बोलता हूं, ये तो रखो, इसको मैं बोलता हूं एज स्पेस, लेट मी कॉल इट स्पेस ओवर हियर।
अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, लेट मी एग्जीक्यूट दिस, वी कैन सी दैट देयर इज अ स्पेस व्हिच इज कमिंग अप व्हिच इज 32. अब ये बहुत ही इंटीग्रल लेवल पर आया, पर मान लीजिए आई मीन दिस वुड हैव कम आउट टू बी समथिंग लाइक अ वेरी वेरी डेसिमल नंबर, जैसे बड़ा डेसिमल नंबर आता है आपका यहाँ पर, तो वहां पर मैं एक चीज को यूज कर सकता हूं, दैट इज राउंड. राउंड का यूज करता हूं और बोलता हूं कि यार इस चीज को हो सके तो 0 डेसिमल प्लेसेस या 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप कर दो. ओके, और 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करने का मतलब है दैट दिस विल कम आउट बी एग्जैक्टली एज इट इज, बिकॉज यहां पर कैलकुलेशन में तो मेरा कोई भी डेसिमल नहीं आ रहा है. ओके, बट अगर डेसिमल आ रहा होता तो यहां पर मैं राउंड यूज कर लेता. ओके, so I probably will add some more data. I think then it'll be more fun to see these kind of things. आगे जाके हम वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड चीजेस देखने वाले हैं, जैसे सब क्वेरीज हो गया, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस हो गया. उस केस में मुझे बेटर डेटा तो ऐड करना पड़ेगा जिसमें काफी सारी न्यूमेरिक वैल्यू है, एग्रीगेशन का काफी स्कोप है, तो मजा आएगा उसमें. फिलहाल जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल केस दैट आई एम जस्ट यूजिंग दिस टूल, आई एम लाइकिंग इट राइट नाउ, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट टू माय स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ देम. ओके, so this is something that we are using over here. Okay, chalo, this is how round is used. Now let me go for the next particular part, that is इसके अलावा मैथमेटिकली मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं. Okay, I'll just use it over here. For example, I'll go for select and I'll just go for another function over here which is power. Select power 2, 4 as I'll go for value. नाम वैल्यू दे देता हूं इसको मैं, तो ये मुझे क्या आउटपुट दे देगा, 2 की पावर 4, दैट इज 60. 2 की 4th पावर, आई एम सेइंग बेसिकली यहां मैं बोल रहा हूं कि पावर का मतलब है कि 2 की 4th पावर कौन सी है ना, 2 की 4th पावर कौन सी, सो आई कैन सी 2 raised to the power 4, सिंपल एज दैट. ओके, राइट, सो आई कैन गो फॉर मेनी सच फंक्शंस, राइट. आई गो फॉर, अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, सेलेक्ट, किसी वजह से मैं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में हूं जिसमें मुझे स्क्वायर रूट निकालना है नंबर का, और लेट्स से आई गो फॉर अ नंबर लाइक 18 एज, अगेन वैल्यू ही बोल देता हूं फिलहाल मैं, रैंडम वैल्यू है ना ये, और इसको मैंने रन करा तो इट्स गोइंग टू गिव मी, अब देखिए यहां पर मेरा स्क्वायर रूट निकाल रहा है, ये तो बहुत सारे डेसिमल्स आ रहे हैं, 4.242640. अब कुछ ऐसी जगह पर राउंड का यूज हो जाएगा, मैं यहाँ राउंड डाल देता हूं और राउंड बोलता हूं, स्क्वायर रूट 18 निकाल के तो दो, पर मेरे को 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको उससे ज्यादा मत जाने दीजिए, तो मैंने राउंड को यूज कर लिया यहाँ पर, है ना. तो राउंड क्या बोलता है, ये वैल्यू है और इस वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिमिटेड रखना है, सिंपल इज दैट. सो मेरे को यहाँ पर मिल गई 4.24. राइट, आर वी क्लियर विद दिस? दिस इज बेसिकली योर राउंड फंक्शन. ओके, चलिए लेट्स क्विकली रैप अप द टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिक फंक्शंस ओवर हियर, है ना. न्यूमेरिक फंक्शंस फटाफट देख लेते हैं, right. And similarly we have exponential over here as well. I'll go for select exponential, correct, exponential of, let's say 3. Okay, and yeah, I mean फिलहाल exponential 3 लिख देता हूं इसको. It comes out to be something like this. This is e to the power 3. e to the power 3 is 2.71 to the power 3. उसका ये यहाँ पर आपका चीजें आ रही है. Okay, so that is exponential is nothing but e, आप लोगों को पता हो, if not given, e is a constant. So those who run in a lot of mathematical data will probably find this useful. Okay, so I'll go for, here it is, there's e to the power let's say 2.6, then e to the power, I think I ran for 3 na, sorry, e to the power 3 over here. e to the power 3 की वैल्यू दे रहा है, ये e क्या है, 2.7 to the power 3 is going to give me this value, right. बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशंस में लगती है इन सब चीजों की जरूरत, बट अभी तो आप मे बी अगर आप बोल रहे हो सर इसकी मुझे क्या जरूरत है, तो आई कैन अग्री विथ यू. सो वी आर जस्ट लुकिंग एट इट राइट नाउ. ओके, बट यू नेवर नो आपके एनालिटिक्स करियर, आपके डेटा साइंस करियर, आपके जेन एआई करियर में ये आपको कब यूज करना पड़ जाए. सो आई एम जस्ट पुटिंग इट अप ओवर देयर. ओके, एंड चलिए ये हो गया एक्सपोनेंशियल. ऐसे ही लॉग रहता है,
we can go for select log of, let's say take any number, log of 20, as I'll go for log underscore value, ये नाम दे देता हूं इसका, as log value. Select log of 20 as log value. This numeric function log is giving me the value of log. Okay, if I run this, you'll get a log value मेरे को निकल के आ रही है 1.30. See, whenever a query comes out to be green, ये जो query है अगर ये green हो गई तो इसका मतलब ये है कि I'm running, the query is run successfully and there is no problem whatsoever. Log value मेरी आ रही है 1.3. So 10 to the power 1.3 is going to give me what? 20 over here. है ना? ऐसे ही बहुत सारे functions रहते हैं. I think these are all nothing but numeric function. We have all the trigonometric function, all the trigonometric, sine, cos, tan, in case you require it that much. Okay. Right. A lot of examples are there as well. For example, अगर salary जैसे column दिया होता, this would have been slightly more fun over here. But that's okay. It's okay. No worries. Right. So by the next class, once we meet, we'll be able to move on to date and time function. तब तक मैं इसमें टेबल ऐड कर चुका रहूंगा. तब तक मैं थोड़ा और डेटाबेस इसका बना लेता हूं, because I was just experimenting this tool and it just came across and I thought that I think it's good. Right. I like it. So what I do is that I started doing it, and I think this is SQL Lite I'm running over here. My SQL workbench से काफी better दिख रहा मुझे यहाँ पर, है ना? Right, guys. So I'll just ensure that this will have more databases over here, so that when we meet next time, I think we'll have better things to practice upon. Right, guys. So as of now, let's end this session over here. We have seen all the न्यूमेरिक वैल्यूज, सारी न्यूमेरिक वैल्यू हम लोगों ने देख ली हैं. मैं फिर से दोहरा रहा हूं इसको कि हम लोगों को ये न्यूमेरिक वैल्यूज बहुत ही स्पेसिफिक डेटा में यूज करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर वक्त नहीं डालेंगे तो अच्छा रहेगा. राइट. बहुत ही स्पेसिफिक केसेस में इसकी जरूरत पड़ने वाली है. बट डेट एंड टाइम फंक्शन, अगला जो डेट एंड टाइम फंक्शन आता है, डेट एंड टाइम फंक्शन जो है आपका, उसकी जरूरत जो है ना तकरीबन हर टाइप के डेटा में पड़ती है. कुछ ही न्यूमेरिक वैल्यूज है जो मुझे लगेंगे. फॉर एग्जांपल शायद मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्स की वैल्यू ज्यादा लगे, क्योंकि एब्स अगर कभी मैं कुछ और निकालता हूं, मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए. दैट इज, मुझे डिफरेंस चाहिए रेवेन्यू और कॉस्ट का. मुझे रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस चाहिए. मुझे क्या बड़ा है इस चीज से कोई लेना देना नहीं है. सो रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस मुझे देखना है, तो वहां पर मैं एब्सोल्यूट लगा दूंगा. राइट. सिमिलरली अगर मुझे किसी चीज को राउंड अप करना है, कोई डिवीजन करा मैंने, बहुत सारा लंबा डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं यहाँ पर, I can use round up over here, just like I've done it over here. ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 निकाल रहा था, बहुत लंबे डेसिमल्स आ रहे थे, मैंने राउंड कर दिया 2 प्लेसेस पे. ये कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन में आ जाते हैं न्यूमेरिकल डेटा में, कहीं कहीं पर उतना नहीं आता. ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड एज डेट एंड टाइम फंक्शंस. ओके, डेट एंड टाइम फंक्शंस हम लोग करते हैं इन द नेक्स्ट सेशन. The next session will be on Monday. That is 5th of August. Okay, we'll do it on that. Right, guys. So allow me to end the session over here. Thank you very much. And if you have any doubts, please put it on the comment box. Comment box में डाल दीजिए. I'll stay in the session for another 30 seconds. And whatever doubts you have, we can just look into it. In case you're watching this content on a recorded version, feel free to put your doubts on the. एक काम करता हूँ, मैं इसको close करता हूँ पहले, है ना, सो दैट आपको यहाँ पूरा का पूरा आपको स्क्रीन दिखे, यहाँ पर स्क्रिप्ट दिखे पूरी. राइट. एंड या, इफ यू हैव एनी डाउट्स while watching this in the recorded version, feel free to put it up in the chat box and I will come back to you on that particular doubt one way or the other. I'll discuss it either in one of these sessions or I'll just make a small video out of it. Okay. All right, guys. ठीक है भाई. Thank you very much. Thanks a lot. And I think I can end the session over here as there are no doubts. Thank you. And see you guys on Monday for the next session. Bye-bye.